So hello everyone. Ultimately we reach to the live session, and this is your marking scheme as per the CBSE as given. CBSE ने यही मार्किंग स्कीम दी है हमको, इसके हिसाब से ही पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो जो पहले के 5 चैप्टर्स हैं हमारी बुक में, वो पांचों चैप्टर्स का जो वेटेज है वो 10 मार्क्स का है। और कहाँ कहाँ से क्या क्या आने वाला है ये ऑलरेडी मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, ठीक है। कोई डाउट हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता सकते हो। वैसे अ, और मैं ये पहले 5 चैप्टर बता रहा हूँ, हम लोग पहले 5 चैप्टर नहीं पढ़ने वाले हैं। हम लोग आगे जाके जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे नेक्स्ट 5 चैप्टर्स, दैट इज दीज 5 चैप्टर्स, राइट। सो दीज चैप्टर्स, जिसमें कि हमको पता चलेगा कि किसमें कितने टोटल क्वेश्चंस हैं और पर क्वेश्चंस कितने मार्क्स अलॉटेड हैं। टोटल हमारे पास 40 मार्क्स का जो वेटेज है वो यहाँ पे दिया हुआ है। किस इंट्रोडक्शन से हमारे पास 7 क्वेश्चंस आने वाले हैं जो 5 मार्क्स के होंगे, ठीक है। 1 मार्क ईच यहाँ से होगा, और शॉर्ट टाइप 1 होगा, लॉन्ग टाइप 1 होगा, ऐसे 7 क्वेश्चन आएंगे। डेफिनेटली देयर वुड बी सम चॉइस ओवर देयर, चॉइसेस रहेगी। जो हम लोग अभी सैम्पल पेपर क्वेश्चन देखेंगे उसमें पता लगेगा कि पेपर कैसे आने वाला है और उसको सॉल्व कैसे करना है। इट इज़ नॉट वेरी मच डिफिकल्ट, ठीक है। तो चिंता करने की बात नहीं है, आई एम विथ यू। और ऐसे हम लोग लग के पढ़ा करेंगे। फर्स्ट साइकिल में जो हमारे पास मार्क्स हैं वो टोटल 6 क्वेश्चन आएंगे। डेटा साइंस हमारे पास टोटल 4 क्वेश्चन आएंगे। कंप्यूटर विजन से 4 क्वेश्चन आएंगे। ऐसे करते करते हमारे पास जो टोटल ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है वो है 24। दैट मीन्स 24 मार्क्स से एक एक मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। और उसमें से हमको कोई 20 करने रहेंगे, दैट मीन्स 20 मार्क्स का वो हो गया, ठीक है। 4 क्वेश्चन मतलब ऑप्शन होंगे हमारे पास में, ऑप्शन होगा। तो हर बार पहला क्वेश्चन जो होता है उसमें 6 क्वेश्चन अगर होते हैं तो उसमें से 4 ही करने होते हैं। अगर आप, ये मेरा एडवाइस है बेटा, अगर आप लोग 6 क्वेश्चन करते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिकॉज जब हम लोग बोर्ड की एग्जाम्स में कॉपी में चेकिंग में जाते हैं तो हम लोग प्रायोरिटी देते हैं उसको। अगर 6 क्वेश्चन किया उसमें से कोई 4 अगर ठीक हो, कोई भी 4, तो हम वो 4 का मार्क्स आपको देते हैं, ठीक है। ये हमारे पास हमेशा ऑप्शन रहता है। सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास जो 6 क्वेश्चन मिलेंगे, शॉर्ट आंसर टाइप 6 क्वेश्चन रहेंगे। क्वेश्चन ज़्यादा रहेंगे, बट आपको उसमें से 6 क्वेश्चन में 4 करने होंगे, ठीक है। तो हर एक चैप्टर में से दिया हुआ है कितने कितने शॉर्ट टाइप, शॉर्ट मतलब 2 लाइन 4 लाइन के क्वेश्चन, 2 लाइन 3 लाइन के क्वेश्चन आएंगे इसमें, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा है वो लॉन्ग डिस्क्रिप्टिव टाइप है, उसमें से 3 ही करने पड़ेंगे। दैट मीन्स 20 + 4 + 3, 27 क्वेश्चन टोटल हमको अटेम्प्ट करने हैं। कितने आवर्स में? 2 आवर्स में। इसके हिसाब से ये 27 क्वेश्चन है, प्लस आपको 4 क्वेश्चन यहाँ से मिलेंगे, 4 क्वेश्चन यहाँ से मिलेंगे, टोटल 7 यहाँ से मिलेंगे। तो 27 वहाँ पे हो गए और 7 यहाँ पे हो गए, ठीक है। सो हमको ये सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। सो हम लोग सबसे पहले जो कवर करेंगे वो है इंट्रोडक्शन टू एआई, कवर कर सकते हैं या इवैल्यूएशन से स्टार्ट कर सकते हैं। बिकॉज ये चैप्टर, इसमें क्वेश्चन कम बनते हैं, ठीक है। इसमें क्वेश्चंस का जो हमारे पास चैप्टर का जो पेजेस, नंबर ऑफ पेजेस है बहुत कम है, 4 5 6 पेजेस का क्वेश्चन चैप्टर है हमारे पास में। दैट मीन्स इसको हमको पता होगा कि क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये हम लोग लास्ट में भी कवर कर सकते हैं, स्टार्टिंग में भी कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ स्टार्टिंग हम लोग इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करें। इंट्रोडक्शन बहुत ईजी होगा, और जब मैंने आपकी प्री बोर्ड्स की कॉपी चेक की थी तो वहाँ पे मुझे बहुत सारी डिस्क्रिपेंसी मिली थी और कीवर्ड्स का यूज़ नहीं किया हुआ था। दो हम लोगों ने वहाँ पे मार्क्स दिए थे, बट ऐसा पॉसिबिलिटी हो सकती है कि वहाँ पे मार्क्स नहीं भी मिले आपको, ठीक है। बिकॉज बोर्ड्स में कॉपी एक बंदा चेक नहीं करता है, 3 से 4 लोग एक ही कॉपी को चेक करते हैं बार बार, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं हो इसके लिए। सो इसके हिसाब से हम जाएंगे। ये अगर मार्किंग स्कीम आपको चाहिए तो मार्किंग स्कीम आपको मैं भेज दूंगा। ये सीबीएसई का ही दिया हुआ है, ग्रुप में या तो चैट में मैं आपको डाल दूंगा इसी वीडियो में, तो आपसे आपको मिल जाएगा, ठीक है। आज हम लोग पूरा प्लानिंग करने वाले कि पढ़ना कैसे। दूसरा, ये मेरा सैम्पल क्वेश्चन पेपर है 23 24 का। तो आप जितने भी क्वेश्चन अगर देखते हो, तो पहला जो क्वेश्चन है ये यहाँ पे एमसीक्यूज है। यहाँ पे दिया है 6 में से 4 क्वेश्चन करना है ओनली, ठीक है। तो 6 में से 4, ये क्वेश्चन पेपर आपने ऑलरेडी देखा होगा। यहाँ पे भी 6 में से 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो ऐसे चॉइसेस आपके पास हमेशा रहेंगे। चॉइसेस में से आपको करना होगा। अगर आपने पहले प्री बोर्ड दिया है तो आपको पता होगा कि कैसे करना है। अगर नहीं दिया है किसी और स्कूल के बच्चे ने तो आपको यहाँ से समझ में आएगा कि कैसे आपको क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करना है। अच्छा, इसको पढ़ने के लिए जो भी, अगर मैंने आपको जो सीबीएसई का सैम्पल पेपर दिखाया अभी, ब्लू प्रिंट है इसमें,
इसमें एक जो चीज़ मैंने नोटिस की है, वो नोटिस बड़ी अच्छी चीज़ की है कि इसका जो भी कंटेंट है, जो भी क्वेश्चंस बने हैं, वो कहाँ से बने हैं। वो सारे के सारे बने, मेरे पास एक बुक है, एआई करिकुलम जो बुक है, इस बुक में से सारे के सारे क्वेश्चन फ्रेम किए हुए थे। दैट मीन्स इस बुक में जो कुछ दिया हुआ है, वो सारा का सारा हमको इस बुक में से अगर हम पढ़ेंगे तो मार्क्स ज़्यादा लाने के चांसेस बनेंगे हमारे। ठीक है, क्योंकि सैम्पल पेपर भी इसी बुक से दिया हुआ है। सो वी विल ट्राई कि हम लोग इसी बुक से पढ़ाई करें। ठीक है, इसी बुक से पढ़ाई करेंगे। और अगर आप बोलोगे कि सर हमें तो यहाँ डाउट है, कुछ और पेपर्स है, सैम्पल पेपर्स, सो एट द एंड हम सारे सैम्पल पेपर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और उसका पैटर्न बताऊंगा कि कैसे सॉल्व करना है उसको। राइट, आई होप अभी तक इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर प्रॉब्लम होगी तो आपके पास लाइव चैट ऑप्शन है ऑलरेडी। यू कैन गो थ्रू द लाइव चैट एंड बता सकते हो कि सर ये प्रॉब्लम आ रहा है हमको। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, ये बुक पे मैं आपको भेज दूंगा कहाँ से मिलेगी बुक, अगर ये क्वेश्चन है तो, कि ये बुक कहाँ से मिलने वाली है। सो आई विल सेंड यू दिस बुक। सो जब सबसे पहले हमारा चैप्टर है वो है, चैप्टर का हेडिंग समझना है पहले हमको, इंट्रोडक्शन टू एआई एंड फंडामेंटल कंसेप्ट्स। दैट मीन्स एआई होता क्या है। तो बेटा आप लोग जो कंफ्यूज हो ना, मैं बताता हूँ कहाँ पे कंफ्यूज हो। आप लोगों का कंफ्यूजन है एआई और रोबोटिक्स को लेके। एआई इज अ डिफरेंट फील्ड एंड रोबोटिक्स इज डिफरेंट फील्ड। तो रोबोटिक्स को एआई में मर्ज मत करो प्लीज। ठीक है, जो आप लोगों को प्रॉब्लम है, आप लोग हमेशा लिखते हो कि वहाँ पे एक बॉट गया है या हम लोगों ने एक मशीन बना दी है, तो इट इज़ नॉट अ मशीन। एआई इज कम्प्लीटली अ सॉफ्टवेयर, यस, विच कैन रन अ मशीन ऑल्सो। ठीक है, इट इज कम्प्लीटली अ सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो इसमें ज़रा सा भी डाउट मत रखो कि उसमें क्या आपको डाउट है कि भाई मुझे क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो एक छोटा सा क्वेश्चन है, व्हाट इज एआई। एआई क्या क्या हो सकता है और एआई क्या नहीं हो सकता। पहला क्वेश्चन मिलता है, व्हाट इज एआई, व्हाट इज नॉट एआई। ठीक है, तो आपका स्मार्टफोन इज नॉट एआई। ऐसा मशीन जिसको कमांड मुझे देना पड़े, लैपटॉप हुआ, मोबाइल हुआ, आपको कमांड देना पड़े, तो वो एआई नहीं है। वॉशिंग मशीन इज नॉट एआई, वहाँ पे बटन्स हैं ज़रूर, आप उसको सेलेक्ट कर ले, उस हिसाब से वॉशिंग मशीन चल रही है, तो वो इट इज़ नॉट एआई। एआई जो ऑटोमेटिक डिसीजन लेगा और उसके हिसाब से काम करेगा, चीज़ों को एनालाइज करेगा और उसके हिसाब से काम करेगा। ठीक है, जब हम लोग आते हैं किसके ऊपर, डोमेन्स ऑफ एआई, सबसे पहले हम लोग कवर करेंगे डोमेन्स ऑफ एआई। जब हम डोमेन्स ऑफ एआई की बात करते हैं तो देयर आर ओनली थ्री डोमेन्स। कितने डोमेन्स हैं? तीन ही डोमेन है। भाई डोमेन पता नहीं कहाँ कहाँ के लिख के आते हो आप लोग। तो हमारे पास टोटल डोमेन तीन है। डोमेन का मतलब है कि हम कहाँ कहाँ काम कर सकते हैं। सो अगर आप देखोगे तो डोमेन्स ऑफ एआई जो है वो है, जिसको पता है अच्छी बात है, डोमेन्स ऑफ एआई जो भी है, नंबर वन, सबसे पहला डोमेन जो है वो आप बोल सकते हो कि इसमें एनएलपी बोल सकते हो, क्योंकि आपने सारे चैटबॉट्स सुने होते हैं, आप एनएलपी बोल सकते हो। एनएलपी का फुल फॉर्म आपको पता है? कुछ बच्चों ने एनएलपी का फुल फॉर्म गलत लिखा है। इट इज नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेस। ठीक है, प्रोसेस। एक्सक्यूज मी फॉर द स्पेलिंग ऑल्सो। ठीक है, थोड़ा जल्दी में लिखता हूँ तो ऐसा हो जाता है कई बार। ओके, सेकेंड है हमारा सीवी, कंप्यूटर विजन। और इन सब के एग्जांपल हम लोग भी देखेंगे थोड़ी देर में, क्या क्या इनके एग्जांपल है। तो सीवी इज कंप्यूटर विजन, ये सेकंड है। और थर्ड, थर्ड है हमारा डेटा साइंस। ठीक है, डेटा साइंस, उसको डीएस भी बोल सकते हो, डेटा साइंस भी बोल सकते हो। अभी अगर हमने तीन चीज़ों को ढंग से समझ लिया तो हमारे बहुत सारे क्वेश्चन यही सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, पहली बात है, एनएलपी में हम लोग क्या करते हैं, नेचुरल लैंग्वेज को प्रोसेस करते हैं। एनएलपी की जब मैं एग्जाम उसकी बात करता हूँ कि कितने एग्जाम्पल्स इसमें आते हैं एनएलपी में। सो नंबर वन, जब मैंने बोला एनएलपी आ गया, सो यहाँ पे आ गया, अगर आप बोलते हो स्पेलिंग एंड ग्रामर, स्पेलिंग चेक कोई कर रहा है, ग्रामर चेक कोई कर रहा है। ठीक है, दूसरा, कोई समरी निकाल रहा है, कोई सॉफ्टवेयर ऐसा है जो समरी निकाल रहा है।
आपने एक स्पेलिंग ग्रामर का सॉफ्टवेयर बहुत सारे वैसे देखे होंगे। गूगल का ट्रांसलेट भी है। इसका अगर एग्जांपल है तो ट्रांसलेट का है ना, गूगल ट्रांसलेट। अरे गूगल ट्रांसलेट जरूर लिख देना एग्जाम्पल में इसके। जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करो बेटा उसके एग्जाम्पल जरूर लिख देना। ठीक है। जितने ज्यादा मार्क्स चाहिए उतने ज्यादा एग्जाम्पल्स हम लोग लिख देंगे। तो ट्रांसलेट, गूगल ट्रांसलेट इसमें होगा। इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है गूगल ट्रांसलेट। और समराइज अगर कोई करता है तो ऑटो समरी बनाता है, ऑटो समरी। ठीक है। चैट जीपीटी आप लोगों ने सुना है ऑलरेडी, सबको रटा हुआ है चैट जीपीटी। ठीक है। तो चैट जीपीटी इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ दिस, चैट जीपीटी। और क्या बोल सकते हो उसके अलावा? कौन सा है? माइक्रोसॉफ्ट का जेमिनाई। ठीक है। चैट जीपीटी और जेमिनाई इसके एनएलपी के एग्जांपल है, दोनों के दोनों। ठीक है। हमारे मेल को कर देते हैं। थर्ड जो है, एक और एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको, ईमेल फिल्टर्स। ठीक है। ईमेल फिल्टर्स, आपने देखा होगा जो आपका जीमेल है उसमें तीन चीज दी हुई है। एक दिया होगा आपका इनबॉक्स, एक दिया होगा सोशल इंजीनियरिंग। जस्ट अ मिनट बेटा, गिव मी मिनट। ठीक है। मैं एक मिनट बात करता हूँ आपसे। सो ईमेल फिल्टर्स हमारे हो गए, राइट। ईमेल फिल्टर्स में आपको तीन मिलते हैं, एक सोशल मिलता है, एक जंक वाला मिलता है, एक आपको इनबॉक्स वाला मिलता है। तो आपको अलग अलग तीन अलग अलग मिल जाते हैं। फिल्टर्स कौन करता है? ये आपका एनएलपी फिल्टर करके देता है। तो ये वन ऑफ द एग्जांपल इज ईमेल फिल्टर्स, राइट। अच्छा, ये ऐसे एग्जांपल्स आपको मिलते हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं एनएलपी के। तो हम लोग जितने ट्रांसलेट करते हैं लैंग्वेज को, वो सब किस में आता है? एनएलपी में आता है। ठीक है। लैंग्वेज प्रोसेस करने के लिए जो हमारे चैटबॉट्स हैं, चैटबॉट्स की हम लोग जब बाद में बात करेंगे तो टाइप्स ऑफ चैटबॉट भी पढ़ेंगे। लेकिन इसमें वन ऑफ द एग्जांपल इज चैटबॉट। और चैटबॉट कौन सा वाला चैटबॉट है? एआई चैटबॉट की बात करते हैं, क्योंकि दो टाइप के चैटबॉट होते हैं। तो ये एआई चैटबॉट है जो इसका एग्जांपल है। ठीक है। सेकंड मेरा क्या आ गया? दूसरा वाला मेरा आ गया, दूसरा सीवी। सीवी का तो आपको रटा हुआ है बिल्कुल, जो हर बार कॉपी में लिख ही देते हो किसी भी तरह से, है ना। वो ड्राइवरलेस कार तो आप लिख ही देते हो टेस्ला की, तो उसको बोल ही दो ड्राइवरलेस कार। ठीक है। दैट मीन्स मुझे कुछ देखना है विजन के थ्रू। डी मेरे कैमराज आते हैं। ठीक है। एआई कैमराज आते हैं जिसमें कि हम लोग डिटेक्ट कर लेते हैं ऑटो, क्योंकि कौन सा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन। इसमें लिख दो ऑब्जेक्ट डिटेक्शन थ्रू कैमरा, ये जरूर लिख देना। ये जरूर लिख देना, क्योंकि कैमरा, सिर्फ अगर कैमरा लिखोगे तो हो सकता है मार्क्स कट भी जाए। लेकिन ऑब्जेक्ट डिटेक्शन आपने लिख दिया तो ये एआई बना दिया उसने। कैमरा सिर्फ एआई नहीं है, जहां ऑब्जेक्ट डिटेक्शन हो गया थ्रू कैमरा, वो एआई हो गया। ठीक है। तो यहाँ छोटे थोड़े थोड़े मार्क्स कट रहे हैं अपने। क्लियर। सी पे आ जाते हैं। और क्या हो सकता है? हमारा सीवी में हो गया, कैमरास हो गया, फिल्टर्स हो गए, स्कैनर्स हो गया, हमारा डॉक्यूमेंट स्कैनर्स हो गए। डॉक्यूमेंट स्कैनर्स, मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स भी अलग से दूंगा, नोट्स अलग से दूंगा, भेज दूंगा। विल ट्राई कि एक चैनल बना लेंगे और उसमें हम लोग ये करेंगे। ठीक है। चैनल बना के, छोटा सा चैनल, मतलब दैट मीन्स, जस्ट अ मिनट, चैट वाला चैनल बना लेंगे जहाँ से हम लोग टेलीग्राम चैनल बना लेंगे, वहाँ पे हम सारे नोट शेयर कर लेंगे एंड यू कैन डाउनलोड एवरी नोट फ्रॉम देयर। सो हमारा डॉक्यूमेंट स्कैनर हो गया। तो डॉक्यूमेंट स्कैनर क्या करता है? ये डिटेक्ट करता है कि इसमें लैंग्वेज की। ठीक है। गूगल लेंस भी आप बोल सकते हो उसमें। इसमें आप गूगल लेंस भी, इसका इसका गूगल लेंस आता है।
एग्जाम्पल है गूगल लेंस। गूगल लेंस आपने यूज किया ऑलरेडी, बहुत सारे यूज किया बच्चों ने, बहुत चीटिंग मारी से, ठीक है। तो आपको याद रहेगा गूगल लेंस इसका डॉक्यूमेंट स्कैनर का एग्जाम्पल है, राइट। बेटा इफ यू वांट टू in English, no issue in that, beta, no issue in that. But most of the students are there who are looking for lecture for understanding it, right? If you want notes, I am ready to give notes. If you want in English only, no issue in that. I can teach English also. So I want everyone to write in the chat whether they want Hindi or English. So I can teach English also. No issue in that, right? So these are the examples of CV which you can write. Okay, third one is data science. Here you have to write the examples. Data science. So data science, you might not find out number of examples for data science, but the very good example is stock market, where we can check the data. Data is there, right? Stock market is one of the example where we can go for the, okay, Hindi English mix, no issue. So stock market is one of the good example. B, graph and charts making. So these graph and charts which we can make, it can be made through data science. That means it can read the data from the file and we can make the graph and charts through which we can analyze the data, right? So these are three domains of AI. So here comes the questions. Number one, how many domains of AI are there? There are three domains of AI, and that are NLP, CV, and data science. Secondly, give one example or two example for the each domains. So here are the examples for NLP: spelling and grammar, that is Google Translate. For summary, it is auto summarize, ChatGPT, Gemini. For email filters, and for AI chatbot. So these are few examples. And second is for CV, it is driverless car, cameras, that is object detection through the camera, and document scanner for from the Google Lens, right? Third one is stock market data analysis, graph and charts, again data analysis. So where number of data is there and we are going to find out something in from the data, it is data analysis, and data science can be used there. Okay. Next is, let us come to the PDF again. Intelligence, what is intelligence? It will not come in the examination. Smartphone, whether it is intelligent or not? No, it is not intelligent. But some software there are in this mobile phone nowadays, it comes under the AI. That means your face cam is AI, right? Face cam you can write there, face cam here, CV. So face cam, face filters and face cam, right? Face cam or face filters. So these are the examples. Now come to the again. Okay. Okay. Types of intelligence. Again, important question. Type of intelligence. You can see the type of intelligence we have asked number of times. Every time when I've given the pre-board questions, I have asked about these intelligence. You have to write the type of intelligence as well as you can describe them, right? Simultaneously, I'm going to read your chats also.
Okay, so let us come to the intelligence. Interpersonal and intrapersonal. You are a little bit confused among them. What is interpersonal and what is intrapersonal? Intrapersonal is knowing about yourself. ठीक है? Knowing about oneself is intrapersonal. Your abilities, your um, your skills about, right? So it is your intrapersonal skills. So these are the intrapersonal intelligence when you know about yourself. ठीक है, मैंने पढ़ाया था ना वो आपको. There are four types of people in the world. So one who knows, one who not knows and not knows he not knows. अगर आपको याद आया हो तो, right? So that is intrapersonal. Interpersonal, that means if you know the people which are to which we are dealing with, ठीक है? So that is interpersonal. We are dealing with our friends, our family members. So if we know about them, that means that is interpersonal intelligence, right? So short notes I'm going to give you. Don't worry about that. Short notes, it will be there on the channel. Musical intelligence, as I told you, when someone knows about music, that is musical intelligence. Mathematical and logical intelligence, when someone can solve mathematical problems easily and logically, that comes under the mathematical and logical intelligence. If you know, if you want some other example, please write in the chat box. I will give some other example also, right? Linguistic intelligence, when someone can deal with more than one language and or two language, that is he would be linguistic intelligence. He can understand the meaning of the language, hidden meaning of the language also. It comes under the linguistic intelligence. uh, Spatial visual intelligence, it is about the space. Spatial means about the space. So when someone knows about the space, how a building can be done, any artist, how can utilize the paper, he is going to make one portrait. So he knows how big or how small he should make so that it comes under a paper, inside a paper, sorry, right? So that comes under the spatial visual intelligence, that he can see what is not there. That means imagination power, right? Kinesthetic. Look at the spelling, please, because you are writing a wrong spelling in pre-boards also. So kinesthetic, as I spell it, Kineesthetic. Kinesthetic intelligence. इसका लोगों ने अच्छा लिखा आंसर. When you are able to use your body parts, limbs, hands, fingers, using to use something like pen, or someone is using football, playing football, है ना? So that comes under the kinesthetic skills. Even sports abilities are come under this kinesthetic. And the last one is existential intelligence. In this intelligence, you know about, you question about the space of world, what is not exist, God is exist or not. Okay, how he can send signal to you. That comes under the existential intelligence, right? So this book I'm going to share with you. These are some, or you can have a screenshot of that also if you want. What I can do is I can just increase the font size so that you can take a screenshot and you will be able to learn from this, because this book is given by CBSE itself. So this will help you out in writing the particular language.
Religious and spiritual awareness, as I said, additional category of intelligence relating to religious and spiritual awareness that comes under the existential intelligence. So questions you have seen already in the pre-board or in the sample paper, that they have given one of the question where some of the categories are given, or some of these things skills are given in the question. Harish is there and he has a he he uses he can do mathematics very well. So which intelligence is that? Like that, this type of questions can be there. Okay. So you have to identify, and you have to identify from that question only. Okay. Don't go outside the question, please. That means that can be 2 marks question, right? Half marks for each intelligence. So you have to write each intelligence. That means you have to find out 4 intelligence among them, and you have to write the meaning of that, right? That means intelligence and the description also, right? So that might be one question. Come to the next. ठीक है. शिव सिंह. This is a general question. What is artificial intelligence? Here, what comes? What is not intelligence? And what is not AI? This question is a very common question. What is not AI? And you can easily write. What do you mean by AI? What do you mean by AI that comes? So AI is, in other words, that means I'm going to give you one more definition if it is written over there. The machine, the ability, when a machine possesses the ability to mimic human traits. This is only a definition. इसमें जो कीवर्ड है वो आपको यूज करना है, एबिलिटी टू मिमिक ह्यूमन. मशीन्स एबिलिटी टू मिमिक ह्यूमन, राइट? दैट इज द ओनली डेफिनेशन ऑफ एआई. अगर इतना भी लिख दिया आपने तो आपका आंसर करेक्ट है. यू नॉट नीड टू डिफाइन इट मोर और फर्दर. दैट्स इट. These some examples are there. So if you can give one example, that is good for you. That means you can achieve some marks. So application of intelligence might become okay, write to examples of AI or AI around us, what you have seen. So you have seen number of things. One is Google, Siri. We have already discussed Google Maps, Amazon.com, and these all recommendation system. So these all apps, social media apps, they are using a recommendation system that is based on the data science, right? So what is that recommendation system? That means on the basis of your input, it decides which videos has to be given to you, right? So that is called recommendation systems. Similarly, YouTube is going to do that. That means if you are typing a song from the sound Sonu Nigam, so when you listen one song from Sonu Nigam, the next song might be from the Sonu Nigam itself, or from the same singer, or same lyrics or same music. So it collects the information from our inputs, right? So these are all apps are using recommendation system. So one of the good example is recommendation system is these social media apps. इसमें रिकमेंडेशन सिस्टम लिख के ही आना है आपको, अगर ये ऐप आते हैं तो. ठीक है. आंसर इज रिकमेंडेशन सिस्टम. एंड आई होप आप लोग एक नोट पैड लेके बैठे होगे अपने साथ में, और वहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट कर रहे होगे, राइट? अगर नहीं लेके बैठे हो तो प्लीज डू दैट. ओके. सो माइट बी दिस पिक्चर कैन कम एंड पूछ सकते हैं कि किसका पिक्चर है. सबको पता है किसका पिक्चर ऑलरेडी. ठीक है. और कहाँ की इसको सिटीजनशिप मिली हुई है? कहाँ की मिली? सऊदी अरेबिया की, राइट? This is again, what is not AI? This is a general question. What is not AI? As I told you, washing machine is not AI.
And if we come to down, air conditioner is not AI because you set the temperature nowadays. uh, because this is an example of IoT, Internet of Things. So you can switch on and off remote this PCs or air conditioner remotely. That is IoT, Internet of Things. It is not AI. AI when AC starts itself and stops itself, right? Some these are projects, these are the robotics, these are not AI. ठीक है, ये AI नहीं है ये भी. This type of games, Xbox games, you have might have played these games. So these are AI. Uh, Cameras with the face scanners are called AI. Biometrics are not AI. Now come to the introduction. We are going not going to the introduction to cover introduction, but you have to know this. That is, Niti Aayog is the only agency, national agency, which is making your syllabus. तो नीति आयोग का नाम आपको याद रखना है. ठीक है, नेशनल स्ट्रेटेजी फॉर एआई, यही हमारा सिलेबस डिजाइन करता विद द हेल्प ऑफ सीबीएसई एंड इंटेल. इंटेल के साथ मिलके एंड सीबीएसई के साथ मिलके इसने हमारा सिलेबस डिजाइन किया हुआ है. ठीक है. वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ये आपको नाम याद रखने पड़ेंगे. समटाइम्स माइट बी ये पूछ सकते हैं आपसे. ओके. 4W याद आया कुछ? ओके, 4W हमको आगे पढ़ना पड़ेगा. सो वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे. KWLH एक डोमेन है. ये छोड़ दो, हमारे सिलेबस में नहीं है ये. ओके, AI ML एंड DL. इसका एक कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन आता है, वो हमेशा आता है हमको डेटा साइंस से आता है ना. जो हमारा बाद का चैप्टर है वो वहां से आएगा, यहाँ से आई डोंट थिंक यहाँ से आएगा, बट फिर भी हमको पता होना चाहिए कि वो AI ML और DL आपस में है क्या और हाउ दे आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर, राइट. सो दैट मीन्स when we are talking about AI is based on machine learning and machine learning is based on deep learning. So it is ultimately deep learning which is driven by which drives AI. Clear? So deep learning is the learning system of, that means algorithm system of system, PCs or the computer systems, which learns itself from the algorithm. These are the algorithm जो अपने आप आपको learn करते हैं वहां से. तो these are the algorithms. ठीक है. वहां से हमारा डीप लर्निंग से, बिकॉज डीप लर्निंग कंज्यूम्स न्यूमरस अमाउंट ऑफ डेटा, बहुत बड़ा डेटा चाहिए जिसको हम लोग बोलते हैं बिग डेटा पे बोलते हैं, राइट. वी कैन कॉल इट बिग डेटा ऑल्सो. So again, that same definition, that AI refers to any technique that enables computers to mimic human intelligence. And machine learning, what is a machine? It is a subset of AI. As you can see the diagram, अगर आपने diagram रट लिया है, समझ लिया है, so you will be able to write these all things. That means machine learning is a subset of AI, है ना, and deep learning is a subset of machine learning, as you can see in this. And as I told in the class also, that generative AI is the subset of deep learning, which is very common nowadays, ChatGPT and others. So what is machine learning? It's a subset of AI which enables machine to improve the task with the experience of the data. So machine learns from the through the data how it has to be behave. As we have talked about recommendation system, that one is comes under the machine learning also, right. So machine learns itself by the its mistakes or the predictions of the decisions what we are doing it, right. So it collects numerous amount of data from all of us through number of apps, applications and tie-ups, right, and it learns from there. So that is called machine learning, subset of AI which enables machine to improve
at task with experience. That means जैसे जैसे experience बढ़ेगा machine ज़्यादा सीखेगी. One of the good example is uh, that game is called tic tac toe. Number one, chess is also one of the game. And what you play that game? That is stone paper scissors. It took a lot of time to recollect the name of that particular game. Okay, so now we are coming to the deep learning system. So deep learning enables a software to train itself. ठीक है? So software which predicts something and train the particular machine or the particular algorithm. That means it can create its own algorithm. ये खुद का algorithm खुद बना सकता है. ठीक है? मशीन लर्निंग क्या है? मशीन लर्निंग algorithm को पढ़ के काम करता है, but deep learning can create one algorithm by itself. ठीक है? The machine is trained with the huge amount of data which has been training itself around the data. Such machines are intelligent enough to develop algorithms themselves. As I said, the machines are intelligent enough to develop algorithms by themselves. खुद से अपना खुद का एक algorithm लिख लेते हैं. आपको बताना नहीं पड़ता कि कैसे algorithm लिखना है या लिख के देना नहीं पड़ता. So they are smart enough to create own algorithm. You have to underline these words or take a screenshot of this particular line, and because you have to write whenever deep learning is there, you have to write this line. ठीक है? So there are a lot of applications of AI, out of which few those which comes under ML, out of which very few can be labeled as DL. ठीक है? तो डेफिनेशन उसमें बहुत कम होगा आपका, बहुत ज़्यादा नहीं है. And as we have already discussed about the data science, computer vision, and NLP, so no need to cover it again. Yes, you can find out some good examples over there. That means price comparison websites will be there, which compare the price. There are few websites which through which you can compare the price of particular articles. Like if you want to purchase one laptop, so you can put into the web and it will show the different prices on different websites. ठीक है? These are some websites given here. Price Grabber is one of the good website. The name is self describing itself. ठीक है? Price Runner, Price Grabber, जंगली. आप लोगों की तरह जंगली तो नहीं है, ये मस्ती करते हो, क्लास में पढ़ते नहीं हो ना, तो अब जाके पढ़ना पड़ रहा है. शॉपजिला, गॉडजिला का छोटा भाई है. ठीक है? और शॉपजिला आपको याद रहने वाला क्योंकि गॉडजिला का छोटा भाई शॉपिंग में हेल्प करता है हमारी. Okay. Computer vision, we have already discussed the computer vision here. If you come through the definition, CV is a domain that depicts the capability of machine to get and analyze visual information, that gets the information, visual information from the camera, right? तो कैमरा नहीं है, इंफॉर्मेशन है ना. मैंने कहा ना हार्डवेयर नहीं है. एआई इज नॉट अ हार्डवेयर. इट कैन रन थ्रू अ हार्डवेयर, बट इट इज अल्टीमेटली अ सॉफ्टवेयर. ठीक है? तो वैसे गलती नहीं करना जैसे आप लोगों ने पहले की. The entire process involved image acquiring, screening, analyzing, identifying, extracting information. तो सारी की सारी चीज़ें वहाँ से information extract करने का काम इसका ही है. ठीक है? ठीक है? This extensive process helps computers to understand any visual content and act on it accordingly. जैसे एक्ट करेगा उसके ऊपर एक्ट करता है. जैसे कार जा रही है, सपोज you have some traffic signals और वहाँ से आपने red light jump किया. So there are some AI cameras which can capture the image of the car, as well as they can zoom on the number of the car and sends alert to the directly this department, transport department, and a challenge will be generated over there, and directly it comes to your mobile or your account. ठीक है? Whether you pay it or not,
it will generate. Later on, it will seize your vehicle. Okay. So in computer vision, input to machines can be photographs, videos, and pictures. Even thermal or infrared sensors which can be there, indicators and different sources. कहीं कहीं पे thermal cameras where you want to find out the heat, right? And infrared sensors can be used कहीं कहीं पे. ठीक है, number of devices. इंफ्रारेड अगर सेंसर आपको नहीं पता है तो these are the sensors. ऐसे इंफ्रारेड लाइट्स होती हैं जो बर्गलर्स अलार्म को स्टार्ट कर सकती हैं, राइट? सो इंफ्रारेड सेंसर्स वैसे होते हैं. नाउ वी कैन कम टू द examples of computer vision. Your favorite one comes here, that is self-driving cars or automatic cars, CVs. Second is face lock in smartphones, that you are already using it, and I'm using it also. So these two examples are given here. We have discussed on a number of examples. NLPs, NLP में we have discussed already email filters, spam filters, that automatic filters और email की ये काम का नहीं है, इसको अलग कर दो, ये काम का है, इसको यहाँ पे main inbox कर दो. So okay, no messages now. कोई इशू नहीं, कोई इशू अगर है तो प्लीज पुट सम मैसेजेस. नो इशू इन दैट. ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. आपने लिखा है सर हिंदी इज फाइन और इंग्लिश फाइन, वॉट एवर. सो क्लास में हम लोग जिसमें समझ में आएगा उसमें पढ़ेंगे, और नहीं समझ में आएगा तो दोबारा पढ़ेंगे. ठीक है, यू कैन राइट दैट इन द कमेंट ऑल्सो. स्मार्ट असिस्टेंट लाइक सीरी, एलेक्सा, एलेक्सा, अमेजन से एलेक्सा एंड एप्पल सीरीज. कंपनी का नाम जरूर लिख देना प्लीज, सो दैट आप एग्जाम को पता रहे कि आपको इतना तो पता है कि कैसे काम कर रहा है, इसको पता है कि किस कंपनी का है. ठीक है. हाँ, you have seen I suppose Netflix and other platforms, so it recommends whatever you are watching on the these series. ठीक है, similar kind of series they are recommending. So moral issues, अच्छा, these type of questions can come also, right? Some moral issues are there. If you read out this, suppose you a car is going, you can read this self-driving cars which are just a concept in today's time, are now on roads. Suppose people like us are buying them for ease and are using it for our daily transactions. Of course. अच्छा, अभी इसमें क्या हुआ? Come to the choices. Uh, okay, let us assume one day your father is going to office in his driving car, self-driving car, and he is sitting at the back seat. The car is driving itself. Suddenly, a boy comes in front of this car. The incident was so sudden that the car is only able to make either of the two choices. Number one is go straight and hit the boy who was come in front of the car, and second, take a sharp right turn or whatever turn to save the boy and smash the car into a metal pole, thus damaging the car as well as injuring the person sitting in it. So what AI has to do there? ठीक है, so situation टाइप क्वेश्चन ऐसे it can come. ठीक है, okay, these are two questions. Why do we collect the data? Where do we collect the data from? And why do we need to collect the data? The answer is very simple. That means AI is working on the data itself. If there is no data, or there is some biased data, or there is some factual, not factual data, erroneous data, so it will generate the problematic answer. ठीक है? If it is having the right data, correct data, it will generate the correct answers.
ठीक है। तो वेयर डू वी कलेक्ट डेटा फ्रॉम, डेटा कहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं? सो ऑलरेडी वी हैव डिस्कस इन द क्लास। डेटा कलेक्शन के लिए, अच्छा, डेटा कलेक्शन के लिए यहाँ पे दो अलग अलग बेटा प्रॉब्लम आते हैं। देखो क्या प्रॉब्लम आता है बताता हूँ, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। जब हमने पूछा है कि डेटा कलेक्ट कर कहाँ से करना चाहिए और कौन सा डेटा होना चाहिए, राइट, विच टाइप ऑफ डेटा हैज टू बी कलेक्ट, तो यहाँ पे दो अलग अलग आंसर्स हैं। नाउ वी हैव टू थिंक स्मार्टली एट द क्वेश्चन, लुक एट द क्वेश्चन फ्रॉम वेयर इट फॉर्म्स। हो सकता है ये हमारे चैप्टर 2 से चैप्टर 3 से पूछा हो, पार्ट ए के, जहाँ पे पूछा है कि डेटा इंपॉर्टेंट क्यों है, ये डेटा कहाँ से आ सकता है, ये डेटा वनरेबल कहाँ से हो सकता है। दैट मीन्स हमको एंटीवायरस पूछता है, वो एंटीवायरस हमको स्कैन करना पड़ा ज़रूरी है, और उसको फायरवॉल लगाना ज़रूरी है। ठीक है, डेटा लीक नहीं होना चाहिए, किसी का पर्सनल डेटा नहीं होना चाहिए। तो ये सब जो आंसर्स है वहाँ लिखे जाएंगे। दैट मीन्स पार्ट 1 में, राइट। पार्ट 2 में जब पूछता है कि किस टाइप का डेटा चाहिए, डेटा में क्या आपको प्रिकॉशन चाहिए, राइट, कि हम डेटा कैसे कलेक्ट कर सकते हैं, जो क्वेश्चन इस बार भी शायद आया था। सो यू हैव टू राइट देयर कि डेटा होना चाहिए, डेटा शुड नॉट बी बायस्ड। पहला आंसर है डेटा शुड नॉट बी बायस्ड, क्योंकि बायस वर्ड जुड़ा है हमारे एआई से। डेटा शुड नॉट बी बायस्ड लिखना जरूरी है। आपने लिखा, आपको मार्क्स 100% मिलेंगे। आपने लिखा एंटीवायरस होना चाहिए, तो नहीं मिलेंगे मार्क्स। ठीक है। सेकेंडली, डेटा मतलब दैट मीन्स इट शुड नॉट बी पर्सनल डेटा। ठीक है, प्राइवेसी इशू होना नहीं होना चाहिए, शुड नॉट बी प्राइवेसी इशू। तो प्राइवेसी इशू का आपको जरूर लिखना है, प्राइवेसी इशू जरूर है, और बायस वाला डेटा जरूर है। ये दो आंसर आपको जरूर लिखने हैं, दो पॉइंट्स लिखने हैं। सो वैसे आपको मिलेगा उसमें मार्क्स। ठीक है। ओके, डेटा कलेक्ट फ्रॉम, डेटा कलेक्शन का जो जगह है, अगर हमने पढ़ा नहीं है ऊपर कहीं, हाँ ये रहा। सो डेटा कलेक्शन का जो जगह है वो आप कहाँ से लेते हो? दैट मीन्स डेटा फ्रॉम द सोर्स ऑन विच वी कैन रिलाई। ठीक है, रिलायबल सोर्स। इट शुड नॉट फ्रॉम द एनी ऑफ द वेबसाइट और फ्रॉम द सोशल मीडिया। ठीक है, इट शुड कम फ्रॉम द गवर्नमेंट वेबसाइट और द ऑफिशियल वेबसाइट। यू कैन राइट फ्रॉम द ऑफिशियल वेबसाइट और फ्रॉम द गवर्नमेंट वेबसाइट। ठीक है, through surveys you can take the data, through sensors you can take the data, right, through observations you can take the data. So I'm going to write it. Observation, number one. Number two, survey. Number three, uh, official websites. Number four, interviews. ठीक है, तो these are the, अच्छा, देर आर टू टाइप्स ऑफ डेटा सोर्स। डेटा सोर्स भी दो टाइप के हैं, तो डेटा सोर्स की बात करते हैं, डेटा सोर्स। सो नंबर वन इज प्राइमरी डेटा, डेटा सोर्स। प्राइमरी डेटा सोर्स में कौन सा आएंगे? जिसको हमने खुद ने कलेक्ट किया, राइट, दैट मीन्स इंटरव्यूज वी हैव डन, हमने खुद ने इंटरव्यू किया है किसी का, तो मेरे पास डेटा आया है, राइट। मैंने खुद ने वेब स्क्रैपिंग की है, वेब स्क्रैपिंग मतलब सर्फिंग, वेब स्क्रैपिंग बोलते हैं उसको। ठीक है, वेब स्क्रैपिंग मैंने खुद ने की है, डेटा में खुद लेके आया हूँ। ठीक है। थर्ड, ऑब्जर्वेशन अगर मेरे खुद के हैं, हाँ, बेटा गिव मी मिनट।
So we were on the we were discussing this sources of data, right? So we have written these are interview, web scraping, and the observations. Through observations we can, these आर द प्राइमरी डेटा सोर्स, ठीक है। प्राइमरी मतलब जहाँ से डेटा मैंने कलेक्ट किया है, हम लोगों ने पर्सनली किया है, तो हमें पता है कि हाँ डेटा सही है, तो उसको प्राइमरी डेटा सोर्स हम लोग बोलते हैं, ठीक है। सेकेंड टाइप ऑफ डेटा सोर्स इज व्हाट? Second type of data source is, where's my pen? Okay. Second type of data source is secondary data source. Secondary data source. When we collect data from someone, किसी से करवा लिया, ठीक है। A collection of data through some agency, ठीक है। किसी एजेंसी से डेटा ले लिया है कि चलो आप मुझे डेटा दे दो, सो वी हैव टू रिलाई ऑन दैट कि चलो उसने किया होगा तो ठीक किया, बट वी डोंट नो कि उसने कितना सही किया है कितना नहीं किया है। तो दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी डेटा सोर्स। सो प्राइमरी डेटा सोर्स मेरा ज़रूरी है, एज द क्वेश्चन आस्क कि कौन सा डेटा मुझे चाहिए, ठीक है। प्राइमरी डेटा सोर्स नंबर वन, एंड द डेटा सोर्स आर जो मैंने बता रखे वो सब, ठीक है। वहाँ से डेटा कलेक्ट करना है। हाँ, डेटा इज द न्यू गोल्ड, इसीलिए why do we need to collect the data? We need to collect the data because AI is working on data, algorithms are working on the data, because data uh, data is new code. Data, through the data we can predict something, ठीक है। If it is a big data we can predict the better results, that's why we need to collect the data. Okay, some random examples are given. This question I have given to you also. Why do these apps collect the data? Because to feed into the AI systems, number one, to do the recommendations, recommendation करने के लिए ज़रूरी है, इसीलिए they are going to take the data, ठीक है। पैसा कमाने के लिए नहीं, रिकमेंडेशन सिस्टम के लिए। पैसा सेकेंडरी, हमको पैसा नहीं बताना है। we have to write the use of the data so that the app works properly. Suppose Google Maps collect the data from the our map, for the map, पैसा कमाने के लिए नहीं, that is the requirement of the app ना। So accordingly we have to write, number one, Google Maps require data for, ठीक है, require data from the to for the coordinates, ठीक है, proper coordinates to show you the right path. That is the answer of the question. Okay, let me check if the chapter is okay. थोड़ा सा चैप्टर बचा है, we are going to complete this chapter. Important question is, what is AI bias? AI bias is very important question. We have to mug up these lines, ठीक है। Everyone has a bias of their own matter. Everyone has their own perspective, right? Clear? So biases are not negative all the time, because as I said, it is the perspective of oneself. Sometimes we are looking for something, someone else is looking for something else. Sometimes it is required to have bias to control situation and keep these things working, ठीक है। So what is AI bias? So when someone develops AI and they are going to feed some data, but the data can be biased, like we have already discussed in the class. That means, as per you can see, the Alexa and Siri, the name and the voice employees, that is a female voice. That's a data. It is AI bias, right? Similarly, I've given one of the example for the soap dispenser, AI bias soap dispenser, right? So that means AI
trained on the bias data will give a bias result. ठीक है, clear? It is written over here. All the virtual assistants have female voice. It is now only the companies have understood this bias and have started giving options for male also. ठीक है? And if you search on Google for saloons, it will show you the female saloons. So this is a data bias, AI bias. What is AI access? That means the accessibility of the AI, the accessibility of the AI, right? It is about the accessibility of the AI. So whether the AI is accessible to whom? So it is only accessible to the people who are having internet connections and the devices which are AI enabled. दो ही पॉइंट कवर करना है इसमें. That means the people who can afford AI enabled devices plus internet connections, because AI cannot work without internet. ठीक है? AI creates unemployment. ठीक है? This is one of the problem. AI creates unemployment. ठीक है? Why it is creates unemployment? Because AI is able to replace the people, laborers works. We are creating the AI for our help only, right? So that it is going to replace us. It is not going to replace us. It is going to help us in our employment. ठीक है? And the industry people who have number of workers with them, and if they want to do work faster, they want to spend less money, so they are asking for the AI so that the work can be done in a faster manner, right? Should AI replace laborer's job? Answer is yes. ठीक है? Is there any alternative for the major unemployment? Alternative you can write by yourself. Alternative सब लोग का अपना अपना अलग अलग डिफरेंट है. Yes, we can do it. Alternative are there. ठीक है? Some of the tasks are there which AI cannot do. As I told you, AI is only a software. It is not a hardware. It can work with the hardware to resolve some problems, but till now it is only I can say it is not able to do number of tasks right now. ठीक है? It is not the strong AI. It is weak AI. So till now strong AI is not there. Till the time we are safe. So these are the open-ended questions. ठीक है? Open-ended, that means you can write the answers by yourself. Whatever answer you will write, it will be correct, because it is asking your perspective, your views on that. Uh, that's it. So first chapter we have completed here. We will meet again tomorrow, and tomorrow the timing will be, the timing will be, can you suggest some time? Can it be 4 to 6? It will be 4 to 6, right? 4 to 6 will be the timings for tomorrow. 4 to 6. Clear? So I'm going to stop the video now. Study hard. Thank you.